Welcome to today's class 10th English first flight, second chapter, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. Let's know few points about Nelson Mandela. Nelson Mandela was born on 18th July 1918. He was died on 5th December 2013. His occupations were activist, politician, philanthropist, and a lawyer. The awards given to Nelson Mandela were Bharat Ratna, Nobel Peace Prize, Lenin Peace Prize. Nelson Mandela was an South African anti-apartheid revolutionary political leader who served as president of South Africa from 1994 to 1999. जो नेल्सन मंडेला थे वो एक एंटी अपार्थाइड रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल लीडर थे जो 1994 में एज एन प्रेसिडेंट सर्व किए थे साउथ अफ्रीका को और 1994 से लेके 1999 तक. ही वॉज द कंट्रीज फर्स्ट ब्लैक हेड ऑफ स्टेट एंड द फर्स्ट इलेक्टेड इन ए फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक इलेक्शन. और ये जो नेल्सन मंडेला थे फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक इलेक्शन में सेलेक्ट हुए थे, मतलब जीते थे इलेक्शन और एक प्रेसिडेंट बने थे, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम was chronicle his early life and years in prison was published on 1994. जो इनकी ऑटोबायोग्राफी थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम वो इनकी लाइफ के ऊपर लिखी गई थी और जो इन्होंने अपना लाइफ बिताया प्रिजन के ऊपर उनके उसके ऊपर ही लिखी हुई थी ये जो ऑटोबायोग्राफी थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और ये पब्लिश्ड हुई थी 1994 में. एन अनफिनिश्ड ड्राफ्ट ऑफ his second volume of memories was completed by Mandela Langa and released posthumously as draft not legal. The presidential year 2017. जो ये एक अनफिनिश्ड ड्राफ्ट ऑफ हिज सेकेंड वॉल्यूम ऑफ मेमोरीज जो थे वो कंप्लीट किया गया था मंडाला लांगा के द्वारा. वो एक साउथ अफ्रीकन राइटर थे मंडाला लांगा एंड रिलीज्ड पोस्ट्यूमसली एज ड्राफ्ट नॉट लीगल द प्रेसिडेंटल ईयर 2017. Mandela's writing and speeches were collected in I Am Prepared to Die 1964 to 1986, No Easy Walk to Freedom 1965, updated 2002, The Struggle in My Life 1978 to 1990, and in his own words 2003. जो नेल्सन मंडेला की जो राइटिंग्स और जो स्पीच थी वो कलेक्ट की गई थी कुछ इनमें, जैसे कि कुछ इसमें से थे कि आई एम प्रिपेयर्ड टू डाई, नो इजी वॉक टू फ्रीडम, द स्ट्रगल इन माई लाइफ. ये सब उनके खुद के शब्दों में लिखा गया था. द ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम विच क्रॉनिकल्स हिज अर्ली लाइफ एंड ईयर इन प्रिजन वॉज पब्लिश्ड इन 1994. जो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम वो इनकी पूरी लाइफ के ऊपर थी और जो इन्होंने लाइफ का मतलब ईयर्स गुजारे जेल के अंदर उसके ऊपर थी और ये पब्लिश्ड हुई थी 1994 में. एन अनफिनिश्ड ड्राफ्ट ऑफ हिज सेकेंड वॉल्यूम ऑफ मेमोरीज वॉज कंप्लीटेड बाय मंडाला लैंगा and released posthumously as draft not legal the presidential year 2017. और जैसा कि आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ यहाँ पे जो इनकी जो आगे की अनफिनिश्ड जो इनकी मेमोरीज थी वॉल्यूम सेकेंड वॉल्यूम ड्राफ्ट ऑफ हिज सेकेंड वॉल्यूम वो फिनिश की गई थी मंडेला लांगा के द्वारा, जो कि एक साउथ अफ्रीकन राइटर थे
आगे बढ़ते हैं. A lovely autumn day. In South Africa, Nelson Mandela is sworn as in as the first black president of South Africa. साउथ अफ्रीका में अब नेल्सन मंडेला एक स्वान के जैसे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट घोषित कर दिए गए थे साउथ अफ्रीका में. In his inaugural address, Mandela, who spent 27 years of his life as an political prisoner of the South African government, declared that the time for the healing of the wounds has come. उन्होंने अपने इनॉग्रल एड्रेस में नेल्सन मंडेला ने कहा, जिस आदमी ने 27 years of his life spent as an political prisoner of South Africa's government, और उन्होंने कहा the time for the healing of the wounds has came. 2 weeks earlier, more than 22 million South Africans had turned out to cast ballots in the country's first ever multiracial parliamentary election. An overwhelming majority chose Mandela and his African National Congress ANC party to lead the country. जो ओवरविलिंग मेजॉरिटियों ने मंडेला और उसकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो ANC है उसको पार्टी उसको चूज किया अपने कंट्री को लीड करने के लिए. Spectacular array. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but an demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. Only moments before, the highest general of the South African Defence Force and Police, finally a chevron of Impala chevron jets left a smoke tails of the back, red, green, blue, a pattern in police and gold of the new South African flag. The struggles. From 1948 to 1994, South African politics was dominated by South African nationalism, racial segregation, and white majority rule known official as apartheid, an African's word meaning separateness, was implemented in 1948. On 2000 on 2000 sorry on 27 April 1994, after decades of armed struggle to terrorist and international opposition to apartheid, the African National Congress ANC achieved victory in the country's first democratic election. Since then, the African National Congress was governed South Africa in an alliance with the South African Communities Party and the Congress of South African Trade Union. These are the fighters for the people who had helped the Nelson Mandela in his fight to freedom. These are the people, as you can see. Two major obligations in life. In life, a man has two major obligations. First, towards his family, to his parents, to his wife, and to his children. Secondly, towards his country, people, and the communities. Everyone fulfills his duty as per his
inclination and interest, but it was very thought to fulfill to a country like South Africa. When Mandela became adult, then he understood that his freedom was only illusion. In fact, he was slaved for exploration. He the only understood that not only he was a slave but his other family members also. यहाँ पे नंसन मंडेला कहना चाहते हैं कि एक आदमी की दो ही ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं। पहली उसके परिवार और पेरेंट्स, वाइफ और बच्चों के प्रति। दूसरा है उसके कंट्री, पीपल और कम्युनिटीज़ के तरफ, और जो फुलफिल करना चाहिए हर एक अपना ड्यूटी। और नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जब वो अडल्ट हुए, बड़े हो गए, तब उन्हें पता चला कि फ्रीडम व उनके लिए बस एक इल्यूजन है। हाँ, इनफैक्ट स्लेवरी स्लेव फॉर एक्सप्लोरेशन, जो अगर एक्सप्लोरेशन ही करना है तो स्लेव बन के करना पड़ेगा। he the only also understood that not only he was slave but his other family members also। बाद में उन्हें ये भी पता चला कि बस वही एक स्लेव नहीं बने हैं, उनके बाकी के भी परिवार वाले स्लेव बन चुके हैं। साउथ अफ्रीका आफ्टर फ्रीडम। Since their freedom in 1994, the South African countries had achieved many success, including greater political establishment and greater economic freedom। यहाँ पे बताया जा रहा है जो फ्रीडम के बाद साउथ अफ्रीका ने बहुत कुछ अचीव किया। सक्सेस के साथ साथ बहुत सारे ग्रेटर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड ग्रेटर इकोनॉमिक फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम भी उन्हें मिला। ऑल ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज कंटिन्यू देयर कमिटमेंट्स टू डेमोक्रेसी एंड देयर हैज बीन modest economic growth. All these could not be achieved without Nelson Mandela. This is a quote given by Nelson Mandela. I learned the courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers fear. By Nelson Mandela. थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।